we were doing questions and I am just taking the discussion in forward direction. We will discuss more questions. So from different exams, I am discussing the previous year questions, okay? Yeah. Sir. So there is a question. In which you have been given the profile of magnetic fields. So you ये मेरे करने के लिए नहीं है questions. जो अब सेशन चल रहा है डिस्कशन का उसमें आपको भी इक्वली पार्टिसिपेट करना है सबको, राइट? तो हम सबको साथ में ही क्वेश्चन सॉल्व करना है. जहां पे प्रॉब्लम आएगी आई विल टेल यू, राइट? सो दिस इज द प्रोफाइल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इट इज 3x स्क्वायर z स्क्वायर x कैप minus 2x z cube z cap, and another profile is b is equal to minus 2x y x cap plus y z square y cap plus 2y z minus z cube by 3 z cap. Another profile is b is equal to xz plus 4y x cap minus y x cube y cap and plus x cube z minus z square by 2 z cap. Okay, and the last one is b is equal to minus 6x z x cap plus 3 y z square y cap. Okay, Yes, so sir. these are some profiles of magnetic field, and they have asked that which one is impossible. Okay, which one is impossible? Impossible. So according to Maxwell's equation, there is only one compulsion on magnetic field, that monopoles will not exist, right? So that compulsion is del dot B is equal to 0, right? तो इनमें से जो भी मैग्नेटिक फील्ड का प्रोफाइल है, वट एवर इज द फील्ड प्रोफाइल ऑफ B, that must follow this equation. You can't write a magnetic field profile which is not following this divergence equation. Every magnetic field should follow this equation, correct? Yes, sir. So जब आप इस तरह से सोचोगे तो आप सबसे पहले del dot B करोगे. So it will become del by del x of this, which will become 0, Yes, sir. plus del by del y component is not there. So which So one ये is? Z cap है ना? This is z cap. So it is 3x square z square x cap minus 2x z cube z cap. Okay, so let us do this. Del dot b एक में करके दिखाता हूं, बाकी आप लोग फटाफट करोगे. So del is x cap del by del x plus y cap del by del y plus z cap del by del z dot product 3x square
Z square x cap minus 2x z cube z cap. Okay. Yes, sir. So Yes, dot sir. product means only this will survive. Y cap is not there. Z cap will survive, right? Yes, So sir. let us see which one is the is not possible magnetic field. So this x cap will result into del by del x. कितना जाएगा? Sir, 6x square z 6 x z x square. 6x z square, and this y cap will give 0 plus this z cap will give minus 6x z square. 6x z square. So this divergence is 0. This divergence is 0. So is this profile okay? Yes, sir. Yes, Yes. sir. So just do it quickly, everybody. Your time. Do it quickly. Sir, fourth one is not okay. So this one, is it giving? सभी लोग जल्दी जल्दी करो. So जब del by del x करोगे तो ये क्या आ जाएगा? minus 2y. Yes, sir. del by del y करोगे तो z square. Plus z square. और जब del by del z करोगे तो it will give plus 2y minus z square. So all of them will become 0, right? When Yes, sir. this one you will do, it will become z. यहाँ पे Z minus x cube minus x cube, and Plus here x cube minus z. x cube plus x cube. minus z. So again, so this is also okay. This is also okay. What is happening here? Let us see. Del dot. This is xz, right? Yes, sir. So this will give me minus 6z Plus 3z square. plus 3z square. Nothing else. Yes, sir. So this is not equal to 0 at every point, right? In the region. So this is not the profile of magnetic field. Okay? Yes, sir. ठीक है ना? So to check whether a given profile of magnetic field is possible, अब देखो यही question, ये तो कार्टेशियन में है तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. But if it was in cylindrical और spherical polar, so यहाँ पे होमवर्क लिख लो. Del dot A पढ़ना है आपको, where A is some vector for these two coordinate systems, right? तो यानी उसमें हमें del दोनों में पता होना चाहिए, right? In spherical polar also and in cylindrical. Then question will become very very nice because वो सबको याद नहीं रहता दूसरे coordinate system में. Okay? Yes, sir. So ये clear है भाई सबको question? Yes, sir. चलो, simple one. But ये जो reading है ये important है. Write in your copy. This you have to read. That how to do del dot A in cylindrical or how to do del dot A in spherical polar. So that may be a good question. Next one is, you have been given a dipole. A dipole is there which is kept at origin in xy plane. Okay, this is xy plane. This is some dipole. This is placed like this. This is a magnetic dipole. Okay, this is a magnetic dipole placed like this.
magnetic dipole you can think of having north pole like this and south pole like this. Okay, ठीक है ना? Yes, sir. So this is a small like magnetic needle जो होती है, you can consider it like this. This is a magnetic dipole placed in the xy plane. Now there are two wires. So this is suppose the z axis, this is coming out of this. So there are two wires L1 and L2, and this is the z axis going into the plane, right? So L1 is located at z is equal to minus a. So somewhere if this is the positive z, ये क्या हो जाएगा? This will be the Negative Z. minus a, and this will be the plus a. Okay, so these are the L1 is located at z is equal to minus a in the xz plane. Okay, in the xz plane, the wire is placed in the xz plane here. Okay, so this is the z axis and this is the x. So x and z plane में वो wire रखा हुआ है. Okay, and at Sir, हाँ, सर हमारा जो ये डाइपोल है ये हमारा XY प्लेन में है. ये कहीं भी है, ये तो छूट फ्री है. ओके ओके. तो ये किधर ठीक है जाएगा? सर. किधर जाएगा? तुम्हारा मैग्नेटिक निडल किधर जाता है? सर जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट जिधर कर रही होती नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है. यस सर. ठीक है ना? तो जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में डाइपोल तो वो तो कुछ भी नहीं है. जैसे चार्ज है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा. एंड इफ राइट देयर इज सर. इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? सो इसी तरह से ये मैग्नेटिक डाइपोल है, इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी सिचुएटेड लाइक दिस इन लाइक किसी भी डायरेक्शन में है. अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों वायर्स हैं L1 और L2, राइट? दिस इज L1 वायर एंड दिस इज L2 वायर. सो ये L1 और L2 वायर के हिसाब से हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी और फिर देखना होगा कि ये वायर किधर जाएगा. तो यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें कहां पे निकालनी होगी? ओरिजिन पे. आर यू गेटिंग इट? यस सर. तो Yes, sir. ओरिजिन पे Yes, जो sir. नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उधर ही ये मैग्नेटिक डाइपोल मूव कर जाएगा, उधर ही मतलब अलाइन हो जाएगा. ठीक है? यस सर. और फॉर द सिंप्लिसिटी हम अलाइन मानेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 180 पे भी अलाइन हो सकता है, बट दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. तो जब कुछ नहीं गिवन है तो वी विल कंसीडर इट टू बी सॉरी Stable. स्टेबल. वी विल कंसीडर इट टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम में हम कंसीडर करेंगे. ओके, ठीक है? तो यस सर. जो L1 वायर है that is in XZ plane. This wire is in XZ plane with current flowing in positive X direction. So ये कुछ ऐसे रखा हुआ है, दिख रहा है? कुछ ऐसे XZ plane में. ये plane XZ है ना? Hello? यस सर. This plane is XZ plane. So ये कुछ वायर ऐसा है, this wire that current is flowing towards X axis. Can you imagine this? यस सर. बताओ भाई. एंड z इज इक्वल टू प्लस a वाला वायर वो yz प्लेन में है. सो दिस वायर is in yz plane, which is in this plane, right? This plane, this is the yz plane coming out of this, because this is z na, this is z, so this is yz plane. Are you getting it? This is z axis, this is yz plane, and current same है, flowing in positive y direction. That means this is kept like this. Suppose this is a point A, so it is kept like this. So this is in this direction. Current I, current I. Okay? तो अब आपको पहले तो ये देखना है कि देखो, जैसे ये सपोज इस तरीके से आ रहा है, पहले इसको देखो. This axis is like this, z axis, and the wire is kept like this. Okay?
in the y direction. So if you see the magnetic field here, due to this wire, it will be in negative x direction. So suppose this is B2 and this is B1. So what is the direction of B2? Can you see this? Yes, sir. In the minus x cap direction. The r cap is in z direction. भाई r cap किधर है? Z cap. So what is the direction of magnetic field dB? It is dl cross. बोलो भाई. Biot-Savart's law. dl cross r cap. R cap. Right? So dl की direction is given. It is y cap. The current is flowing in y cap direction. And what is the radius vector? You can see it is in z cap direction. So what is y cross z? Sir, x cap. Sir, actually minus z cap direction की तरफ है ना? Just a second. X, Y, Z. What mistake I am doing in coordinates? सर ये minus z cap direction है, r cap, ना कि z cap. Oh, yes. So this is your current element, and yes, this is minus z cap. Right. So what is the r cap? It is from the source, na? From the source towards the point. Right. Correct. So this will give me minus x cap direction. Okay. So ये magnetic field आ गई B2 किस direction में है? B2 is equal to some B. Whatever is the value, you can write the value because it is the current is same and the distance is same, so both values will be same. So let us write it B naught, and in the direction minus x cap. Please see this. Okay. So please remember the Biot-Savart's law. This is the current element IDL, and this is the point P where we want to calculate. So this is the r cap direction, which is away from the source. So here source is this. So away from the source, this is the direction of r cap. Correct? So this will be minus z cap direction. It will become minus z. ऐसे तो simple finger right hand rule से सीधा ही दिख रहा है. It is in the minus x cap direction. But this is very good. If the geometrical things comes into picture, you can apply this. अब दूसरा वाला देखो. दूसरे वाले का भी ऐसे कर लो. dB is equal to dl cross r cap. So what is the direction of dl? Current की direction क्या है? X cap. X cap. Plus x cap. Yes, sir. And what is the direction of r cap? Z cap. Minus y cap. So r cap. So this is the current which is in the xz plane. xz plane में है. So what is the direction? Okay. This is the current element, and towards the origin you calculate Z cap. Sir, z cap. So what will be the direction? It will be z cap, right? So what will be the dB? dB क्या हो जाएगा? Minus y Not cap. minus y cap. Minus y cap. Minus y cap. So now make the diagram. This is B1. Okay. So one magnetic field, this is X, this is Y. One magnetic field B1 is towards this, and another magnetic field B2 is towards minus x cap, towards this. So net magnetic field will be towards this. Am I right? And because both Yes, sir. values are same, B naught को मैंने क्यों same ले लिया? Because you know, due to infinite wire, it is mu naught I upon 2 pi r. And both distances are same and the value of current is same, so I can take B naught, right? So this angle will be equal to 45 degree. बोलो भाई. This Yes, angle, sir. अभी मैं direction नहीं बना रहा. This angle is 45 degree. And if you measure it from the x-axis, how much it will be? If you measure it from x-axis, 125. 180 plus 45. 180 plus 45. 45. Or you can measure this side also. You can measure this side also. The Minus clockwise. 125.
तो कितना हो minus जाएगा 180 minus 45. माइनस 180 minus 45. no So no minus bracket. no this is Minus 90 135, sir. 90 plus 45 right so minus 135. 90 plus 45 that is minus 135 is that clear Yes, sir. so dipole की डायरेक्शन किधर हो गई जिधर नेट मैग्नेटिक फील्ड है the direction of dipole is in the direction of net magnetic field is that okay please write it as a note because सबसे बड़ी बात तो पहले वही समझने वाली है कि डाइपोल किधर जाएगा तभी तो आप निकाल पाओगे ना कि तभी तो आप सोचोगे कि यू हैव टू कैलकुलेट नेट मैग्नेटिक फील्ड राइट Yes, sir. ओके सो एनी डाउट बिकॉज इसमें कुछ नया पूछा जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे हमेशा आपका उतना दिमाग काम नहीं करता तो लैंग्वेज में ही गिवन है इवन फिगर की भी जरूरत नहीं है इट इज गिवन इन द लैंग्वेज तो अगर आप लैंग्वेज के हिसाब से ही कर डीएल क्रॉस आर कर लो तो यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यस और नो Yes, sir. एंड बिकॉज ये दोनों सेम थे बी नॉट इसीलिए जब मैंने tan थीटा निकाला तो tan थीटा 1 आ गया था तो इसलिए ये वाला एंगल कितना आ गया 45 एंड ऑल्सो दिस एंगल इज ऑल्सो 45 राइट ओके सो बिकॉज अगर एक्स एक्सिस से बताना हो एंटी क्लॉकवाइज तो हम ऐसे बताएंगे राइट बोलो भाई और अगर क्लॉकवाइज बताना हो तो हम ऐसे बता सकते तो दोनों तरीके हैं बताने के बोलो करेक्ट Yes, sir. Yes, sir. तो विद रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना एंगल हो जाएगा ये कितना आ जाएगा 180 plus 125. 220 45. तो दिस विल बी द आंसर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो अच्छे से समझ आया आ गया अच्छे से समझ Yes, sir. चलो now this is a question in which there is a rod okay and this is the axis this rod is rotating like this rod is rotating like this can you imagine how it is rotating Yes, sir. this is omega it is rotating like this then only the omega will be this na if you see the direction of rotation the thumb will give you the direction of omega right so it is rotating like this suppose this is the plane you can see on this plane it is rotating like this and what we have to do is this is a rigid uniform rod PQ P and Q this is of mass m right the rod is of mass m and it is pivoted at this P I mean यहाँ से बंधी हुई है बाकी फ्री है मूव करने के लिए okay carries a constant current I it rotates so let me consider that the current is in some direction it is not given no problem I will take it in some direction actually there is a connection like this has got one connection which is connected to positive side of the battery and this goes like this okay to this P like this so that means what will happen current will go like here and it will come through here okay right so they want to ask that magnetic field is perpendicular to this plane this is the plane and a magnetic field B is perpendicular to the plane
and they want to ask if the current is switched off, then what will be the angular acceleration alpha if the current is switched off. So how I can calculate the angular acceleration? So please understand this question. Because there is a magnetic field, and you can see if magnetic field is perpendicular and current is flowing like this, so what will happen? There will be a force. Please see this. ये magnetic field है, ये current flow कर रही है, right? Suppose current is flowing, this is positive, current is flowing in this direction. So dl cross b, that means this wire will feel a force like this. It will start rotating like this. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हर पार्ट इसका एक फोर्स फील करेगा और ये इस तरीके से रोटेट करना शुरू कर देगा, और जब रोटेट करेगा इसके अबाउट, तो आई कैन कैलकुलेट द टॉर्क. आर यू गेटिंग इट और नॉट एवरीबॉडी? Yes, तो sir. फोर्स वी नो दैट. सर यस. सर करंट एक्सल पे बह रहा है सर, जो ये कल लाइन है सर, ये इस पे बह रहा है रोड पे. हाँ, ये जो एक्सेल है, इस Yes, sir, yes, एक्सेल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है, राइट? ओके सर. और sir. ये जो दूसरा एंड है उसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है, तो सर्किट कंप्लीट हो गया ना ओके सर. यस भाई. सर. इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस देना था, तो इसको नेगेटिव ठीक है. पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया और इसको पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया. ओके सर. ओके. तो सर ये जेड एक्सिस में है बी. ये किसी प्लेन में है, और सपोज यस सर. वो पर ऐसे देखो ना, ये इसमें मूव कर रहा है, इस कॉपी के ऊपर sir. रॉड घूम रही है, और परपेंडिकुलर पे मैग्नेटिक फील्ड है. परपेंडिकुलर इज द मैग्नेटिक फील्ड, राइट? ओके. अभी देखो, ध्यान से देखना. सो व्हाट विल हैपन, दैट एवरी स्मॉल पार्ट विल फील अ फोर्स. एम आई राइट? एंड फोर्स Yes, वी sir. नो इज गिवन बाय, व्हाट इज द फोर्स? वो तो हम पढ़ चुके हैं ना. फोर्स ऑन अ रॉड, F is Yes, equal sir. to I IDL cross B. L B and sine of theta, and here theta is 90, right? So it will become I L B, right? Suppose L is the length Yes, of sir. the rod. अब देखो, हमें बड़े ध्यान से देखना होगा टॉर्क. What is torque? Please understand. Suppose this is the line of force, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसको एक्सटेंड कर दो, that is known as line of force. That is known as line of Force. 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 एंड जिस पॉइंट से आप देखना चाह रहे हो, रेफरेंस पॉइंट, वहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो. सो दिस विल बी नोन एज आर परपेंडिकुलर. सो टॉर्क इज गिवन बाय आर परपेंडिकुलर इनटू लाइन ऑफ फोर्स, इनटू फोर्स. आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. और सपोज इफ यू वांट टू कनेक्ट डायरेक्टली, then that theta will come and it will become r क्रॉस f. Cross here. तब क्रॉस एफ बन जाएगा. तो अगर सपोज ये डायरेक्ट सपोज फोर्स यहाँ पे देख रहे हो, दिस विल बी आर एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर, सो दिस विल बी थीटा, राइट? दिस विल बी थीटा, दिस विल बी आर, दिस इज आर कैप, so r and this will be theta, so it will become r cross f. So basically this r perpendicular will be nothing but r sin theta. So मैंने वो अलग करके लिख दिया है. Is that okay? ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो अब जब टॉर्क निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, आई विल राइट अ स्मॉल टॉर्क फर्स्ट ऑन स्मॉल लेंथ dx, which is at a distance x, and suppose this p point is now origin. Now this o is this o. Are you getting it or not? Yes, sir. And Yes, this is the line of force. So this is the perpendicular distance from o to this line of force. If I put a perpendicular, this will become a perpendicular distance. So it will become x into I dx into b, because this length of the rod that I am considering at a distance x is dx. Please see, समझ आ रहा है? yes, sir. Yes, sir. ये एक जगह समझोगे, 5 जगह काम आएगा.
मैकेनिक्स में भी है, ईएमटी में भी है, और किसी को डाउट हो तो पूछ लेगा। इज दिस ओके? यस सर। यस सर। अब पूरे पे टॉर्क निकालना है, बिकॉज हर पॉइंट पे टॉर्क अलग होगा ना। आर यू गेटिंग तो इट? फोर्स की डायरेक्शन जेड कैप में है। अरे कोई कैप लगाने की जरूरत है क्या? मैं तो जरूरत ही नहीं समझ रहा भाई। ये तुम अगर एक्स वाई प्लेन में ले लो, एक्स वाई प्लेन में मान लो रॉड है, ठीक है। इफ रॉड इज एक्स वाई प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। हेलो, सपोज दिस रॉड इज लाइक दिस, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। समझ रहे हो बात को या यस नहीं सर। भाई? और यस मैग्नेटिक सर। फील्ड ऐसे है, और रॉड में यस मान सर। लो करंट ऐसे बह रहा है, तो डीएल क्रॉस बी करोगे, एल वाई क्रॉस कैप बी, में आएगा। तो वाई कैप में आ जाएगा फोर्स का डायरेक्शन। तो बेसिकली इस पॉइंट के परपेंडिकुलर यही तो मैंने बना दिया, ये लाइन ऑफ फोर्स हो गया। ओके, यस सर। ओके सर। ओके सर। so tau will be equal to IB integral 0 to L x dx, and this tau will be equal to, बोलो भाई, IB L²/2। L square by 2। देख रहे हो कैसे कैलकुलस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और मैकेनिक्स सब साथ साथ चल रहा है। ये क्लास 12th की चीज है जो मैंने आपको समझाई। ऐसे एंगुलर मोमेंटम का भी कॉन्सेप्ट है, राइट? सेम, सपोज इधर mv मोमेंटम है and you want to calculate M angular R cross P। momentum, so this will be same, r perpendicular into mv। तो ये हो गया, टॉर्क निकल आया। नाउ दे वांट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपको पता है कि कोई रॉड है, उसका टॉर्क जो होता है मैकेनिकल, दैट इज गिवन बाय आई अल्फा, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो यस भाई, सर। यस है? सर। यस सर। अब मजेदार बात यह है कि हमारे पास एक रॉड है जो ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है, एल लेंथ की रॉड है। तो मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन भाई मुझे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिर्फ बेसिक फॉर्मूला पता है कि अगर एक छोटा सा मास डीएम है और वो एक्स डिस्टेंस पे घूम रहा है, तो स्मॉल एक्स मोमेंट ऑफ स्क्वायर। इनर्शिया मुझे पता है डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। यस सर। ये पता है यस मुझे। सर। तो मुझे यस सर। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ये सर इस छोटे एल वाले स्क्वायर बाय 3। मास को लैम्डा इंटू डीएक्स लिख दूं, जहां पे लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है ना। लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ। तो इस छोटे से टुकड़े का मास कितना हो जाएगा? लैम्डा डीएक्स। यस सर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एल इंटीग्रल स्क्वायर बाय लैम्डा डीएक्स इंटू एक्स स्क्वायर 0 to L। So it will become m by L into L cube into L cube by 3। यस सर। करेक्ट, करेक्ट लिख रहा हूं। L यस सर। and L will be gone, it will become m L square by 3। यस सर। आ गया भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लिख लो m L square by 3 into अल्फा इज इक्वल टू, कितना टॉर्क आ रहा था जब स्विच ऑफ किया? आई IB बी L²। एल स्क्वायर। इस आई और इस आई से कंफ्यूज मत होना, ये करंट है और ये इसको गाढ़ा कर दिया है मैंने। ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इज दैट ओके? दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा भाई? एल स्क्वायर सर 3 आईबी अपॉन 2m 3IB अपॉन बाय 2m 2m। 2m। सर 2 रह गया सर वहां पे, 2 नहीं लिखा अपॉन 2 में। आईबी एल स्क्वायर बाय 2 है सर। 2 सही कह रहे हो। 2m 3IB अपॉन 2m 2m।
So this is your angular acceleration. तो क्वेश्चन समझ आया? यस सर। Yes, sir. एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सर ये? हाँ, ये बहुत जगह का क्वेश्चन है, तुम जिसमें सर, चाहो तो। NCERT एनसीईआरटी में भी है, जैम प्रीवियस ईयर में है, गेट प्रीवियस ईयर में है, जेस्ट प्रीवियस ईयर में है। तो जो आपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन डाला था वो आप लोगों ने किया भाई या नहीं?